ठीक. So up till now what we have learned, what are electrocyclic reactions? Okay. In this, what happened? Open chain electrocyclic reaction may takes place, or electrocyclic ring closure may takes place, or electrocyclic ring opening may takes place. Okay. So electrocyclic reaction takes place in two ways, either ring closure or ring opening. Okay. After that we have written that all electrocyclic reactions are therefore reversible. After that we have written the conditions for electrocyclic reactions. What is the first condition? Pi unsaturation is there and that should be a continuous. Another condition is the termini of that pi unsaturations are specially closer. Okay, if they are specially closer, then only they will undergo electrocyclization reactions, and we have written several examples over here. Okay, next one is types of electrocyclization reactions. In that, electrocyclization reactions are of two types: 4n pi electron electrocyclic reactions and 4n+2 pi electron electrocyclic reactions. Electrocyclic reactions are of two types. First one is 4n pi electron electrocyclic reaction. 4n pi electron electrocyclic reactions, and second one is 4n+2 pi electron electrocyclic reaction. (4n+2 pi electron electrocyclic reaction). So what are 4n pi electron electrocyclic reaction? Those electrocyclic reaction in which either ring closure or ring opening takes place, and they involve even number of bonds. Okay, or ring closure or ring formation electrocyclic reaction takes place by involving even number of bonds, are called as 4n pi electron electrocyclic reaction. Okay, लिखेंगे the ring opening or ring closure electrocyclic reaction take place with involvement of even number of bond, are 4n pi electron electrocyclic reaction. Or the electrocyclic ring closure or ring opening reaction in which even number of bonds are decided or will involve to get the product are called as 4n pi electron electrocyclic reactions, और ऐसे electrocyclic reaction जिसमें odd number of pi bond या odd number of bond involve होते हो product formation में या फिर ring closure ring opening में, उनको क्या कहेंगे हम 4n+2 pi electron electrocyclic reaction. Okay,
the electrocyclic reaction, the electrocyclic reaction which involves, यहाँ पर शॉर्ट में लिखेंगे, which involves odd number of bonds, odd number of bonds in formation of product, in the formation of product, in the formation of product are 4n+2 per electron electrocyclic reaction. In electrocyclic reaction, anionic molecules can also be a substrate. Ionic molecules, that is anionic or cationic molecules, can also be a substrate, but we will not get any kind of intermediate in these reactions. Okay, in any pericyclic reaction we will not get any kind of intermediate, but the intermediates are substrate. Intermediates may be substrate, वो substrate हो सकते हैं, वो reactions start कर सकते हैं. For example, हम यहाँ पर example लिखते हैं. This is the first example. This molecule, when heated or when we supplied light radiation to this, we know the electrocyclic reaction takes place under thermal condition and photochemical condition. So here we will get a cyclic TS, cyclic transition state, and then it will get converted into product. So what is the product? Product is this one, cyclic product. So we can say this is electrocyclic ring closure reaction. But what happens with the number of bonds? How many bonds are involved to get this product? So you can say that this is 1, 2, 3, 4. What happened over here? These two bonds are shifted here to form new sigma bond, and these 2 pi electrons are shifted here between 2 and 3. So how many bonds are involved? 2 bonds are involved. 2 bonds are involved means they are even number of bonds. If even number of bonds are involved in product formation or in electrocyclic ring closure or in electrocyclic ring opening, then it is 4n pi electron electrocyclic reaction, or it is 4n electrocyclic reaction. If we see this example, double bond is there, single bond, double bond, single bond, double bond. This is the another example. Okay. If this is 1, this one is 2, this one is 3, 4, 5 and 6. We have given number to the each carbon. And why we are giving number? To identify the electrons are involved or not during the bond making or bond breaking, we can say. So this 1 to pi bond will shifted between 1 and 6. So it will get converted into sigma bond. So this 5, 6 pi bond will get converted between or shifted between 4 and 5 carbons, and this will get converted into 2 and 3 carbons. So again we will get here cyclic TS. Either we have heated this molecule or supplied light radiation. So here what we will get? We will get a cyclic transition state. Here new sigma bond is formed. This pi bond is broken. Here new pi bond is formed. This pi bond is again shifted. New pi bond is formed, and here breaking up this pi bond. What we will get? Again get cyclic TS. Cyclic TS. And this cyclic TS will get converted into product, and product is this one. Here generation of new sigma bond between 1 and 6. This is 2, 3, 4, 5. 5, 4 में डबल बॉन्ड, 2, 3 में डबल बॉन्ड. तो हर एक डबल बॉन्ड क्या हुआ? रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ. Each and every double bond is participated in reaction. So how many bonds are participated? 3 bonds, means there are odd number of bonds. And if odd number of bonds are involved in product formation, it is 4n+2 type of electrocyclic reaction. Understand? बात समझी? यहां तक समझे? तो अभी आपको क्या करना है? आपको 4n कौन से रिएक्शन होंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक और 4n+2 कौन से होंगे वो आइडेंटिफाई करना है.
ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो है तो आपको जो है मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, स्टार्टिंग मटेरियल को वो किस तरीके से था, कैसे कन्वर्ट हुआ, स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, क्या बन गया, ठीक है। यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, कितने इलेक्ट्रॉन जो है तो वो इन्वॉल्व हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, या कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्प्लेस हुए, डिलोकलाइज हुए, ठीक है। तो स्टार्टिंग मटेरियल और प्रोडक्ट दोनों को ऑब्जर्व करिए और बताइए कि कौन सा फोरियन सिस्टम होगा, या फोरियन पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा, कौन सा 4n+2 टाइप का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होगा। आई विल राइट सम एग्जांपल, आई विल गिव सम एग्जांपल फॉर योर होमवर्क, यू हैव टू आंसर इट इन another lecture, okay, or you have to WhatsApp me answers of this homework, okay. Before that I will write some example and explain, and then I will give you some questions for homework, okay. So for example, we have this allylic cation. What is this? This is allylic carbon CH2 positive. This is 1 and 2 and 3. This is allylic carbocation. Allylic carbocation. allylic carbocation क्या है, ये एक इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट रिएक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखिए। तो अगर हम इसको हीट करते हैं या हम इसको लाइट रेडिएशन सप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये जो दो पाई इलेक्ट्रॉन थे ये यहां से इस कार्बन पर अटैक करेंगे, तो बॉन्ड बनेगा 3 और 1 में, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 पर, तो यहां पर मिलेगा हमको एक साइक्लिक प्रोडक्ट पॉजिटिव, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट भी लिखते हैं, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट से मिला। तो सपोज करते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट क्या मिलेगी, यहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी मिली, साइक्लिक, कैसी मिली, यहाँ पर मिली साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पर नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, उसको डैशेस से लिखे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसको डैशेस से लिखे, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा है इसलिए इसको भी डैशेस से लिखे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा हमको, क्या हो गया, ये 1 था, ये 2 था, ये 3, न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द 1 and 3, so positive charge is developed on second position. So what we have said over here, what we have observed over here, that this pi bond will get converted into sigma bond, and this is the electrocyclic reaction. With expense of one pi bond, one new sigma bond is formed. With expense of one pi bond, one new sigma bond is formed. So how many pi bonds are involved, or how many bonds are involved in this reaction? Only one bond. So this is odd number of bonds. So this is 4n+2 pi electron system. Okay. So what we have observed over here, one pi bond will broken, get converted into one sigma bond. So only one bond is involved in the product formation, and that's why this is odd number of electrons, and this is 4n+2 pi electron system. Okay. So here it is 4n+2 electrocyclic reaction. Okay. So just by observing the product, we can say that only one pi bond is here broken and here new sigma bond is formed. That's why it is 4n electrocyclic reaction. If I write another example, for example here this is double bond, single bond, single bond, double bond. Here negative charge, double bond and double bond. Okay. Double bond and double bond. Continuous unsaturation is there, and I am directly writing product here. If I heated and I supplied light radiation to this, then what happened? Here we will get this product. New bond formation here. Then this is shifted over here. This is shifted. So how many? How many bonds or electrons are shifted? So you can say this is negative charge. Negative charge means one pi bond or
one bond or two electrons. Okay, so what happened here? This negative charge is shifted over here. We can again number the first starting material. This is 1, this one is 2, this one is 3, this is 4, this one is 5. This is 1, this is 2, 3, 4, 5. तो क्या हुआ इसमें? यहां पर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड इधर चला गया, ये बॉन्ड इधर चला गया। कितने बॉन्ड इन्वॉल्व हुए? तो क्या हुआ? कौन सा सिस्टम हुआ? 4n+2 इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। समझे? हाँ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने इन्वॉल्व हुए? ये 2 पाई बॉन्ड हुए और एक निगेटिव चार्ज भी क्या होता है? ये बराबर होता है एक बॉन्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 1 बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 1 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू 0 बॉन्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी यहां पर कोई बॉन्ड नहीं, पॉजिटिव चार्ज का मतलब यहां पर कोई बॉन्ड नहीं। हो गया सर? ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं देता हूं आपको। होमवर्क में मुझे व्हाट्सएप पे आप भेजेंगे, ये अपना जो ग्रुप है एमएससी का, उस पर भी आप सॉल्यूशन एग्जांपल सॉल्व करके वहां पर सबमिट कर सकते हो। ठीक है, या फिर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हो। कुछ एग्जांपल लिखिए, इसमें बताइए फाइंड द सिस्टम्स इन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और फाइंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन। क्वेश्चन इज व्हाट? फाइंड द टाइप ऑफ electrocyclic reaction, electrocyclic reaction, either 4n or 4n+2. This molecule, when heated or supplied light radiation, will get converted into this one. You just observe the molecule and say what kind of or with what kind of system takes place between these molecules. Continuous conjugation is there, and if we heated or supplied light radiation, what we will get? We will get this type of. Find the system in these 3 examples. Find the systems in these 3 examples. Okay, so we'll stop here. This lecture is also available offline on the same app, that is Teachment app. Okay, after some hours. You can also watch it after some hours, 1 to 2 hours. Have you written? All of you have written? Ishra? Okay. बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी बोलिए, ये जितनी चीजें हो रही कुछ भी रिवाइज नहीं होगा, कुछ भी रिपीट नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। ठीक है, तो अभी सभी को लेक्चर अटेंड करना है और इसमें जो अटेंडेंस है वो पूरी आती है। जो 100% फर्स्ट मतलब हावर से जो बैठ गया, फर्स्ट मिनट से जो बैठ गया पूरे घंटे तक, उसकी अटेंडेंस अलग आती है।
और जिसने मिडल में लेफ्ट कर दिया उसकी अटेंडेंस अलग आती है। वो समझ में आता है कौन मिडल से गया और किसने पूरा लेक्चर अटेंड किया। ठीक है, तो मिडल से लेफ्ट करना नहीं है किसी को भी। You have to attend the whole session, whole lecture. Okay, so today we'll stop here. Tomorrow again we'll meet at the same time on same location. ये नमीरा का वाईफाई लिया मैंने, नहीं वो हॉटस्पॉट लिया हमने। ये इसका नेटवर्क कम आ रहा था ना, तो उसमें क्या है कि दिखा